Hello guys, please confirm if the voice is clear so that we can start. Hello. Guys, please confirm about the voice. Okay, great. Welcome back everyone to the legal session. ठीक है, all legal aspirants जो भी आप लोग dictations लिख रहे हो, make sure that you include general matters in your practice as well. आप लोग सिर्फ legal पर ही मत रुको, ठीक है. That is an advice which I'll highly recommend, क्योंकि बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्टूडेंट्स हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ आप लीगल डिक्टेशन करते हो, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट अप्रोच. आपको अपने डिक्टेशंस में कैलाश चंद्रा भी इंक्लूड करनी चाहिए, आपको जनरल मैटर्स भी इंक्लूड करनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आपका लीगल डिक्टेशन एकदम टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग. एंड दो स्टूडेंट्स जो लोग सिर्फ एसएससी के लिए आप लोग सिर्फ केसी और प्रोग्रेसिव मैटर प्रैक्टिस करते हो, सो माय एडवाइस फॉर यू विल बी, आप लोग हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार लीगल डिक्टेशन लिखा करो. व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस इज़, जब भी आपके स्टेट में कोई हाई कोर्ट में या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अगर वैकेंसी आती है, सो आप उसको फॉर्म भरने से डरोगे नहीं, और अगर फॉर्म भर भी दिया तो आप लोग कम से कम एक हैबिट में रहोगे लीगल डिक्टेशन लिखने के. सो दैट इज समथिंग विच इज़ रियली हेल्पफुल. आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, ताकि ये आप लोग के दिमाग में फिट हो जाए दैट यू आर नॉट एसएससी स्टेनोग्राफर, यू आर नॉट अ कोर्ट स्टेनोग्राफर, यू आर जस्ट अ स्टेनोग्राफर. आपको, मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपको इनकम टैक्स की 50,000 रुपीज़ सैलरी लेनी है, या आपको बस एज अ स्टेनोग्राफर 50,000 सैलरी लेनी है, ठीक है. सो मेक श्योर कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर हो. जहाँ से जल्दी जॉब मिलेगी वो पहले ले लो, बाकी जो प्रोसेस रहेगा वो चलता रहेगा. आपके होम स्टेट का, आपके मन पसंदीदा जॉब का, प्रोफाइल का, सब चलता रहेगा काम, ठीक है. चलिए, गेट रेडी एवरीवन फॉर द डिक्टेशन. 420 वर्ड्स हम लोग अभी करने वाले हैं एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 80 to 85 वर्ड्स पर मिनट, या मे बी 90 WPM पे चला जाए. आफ्टर मैटर हम देखते हैं क्या स्पीड थी आपकी, ठीक है. गेट रेडी एवरीवन गाइस, डिक्टेशन स्टार्ट्स इन 5 seconds. रेडी? Steno School Legal Dictation 3, 2, 1 start. In the counter affidavit filed by the CCI, it was explained that there was an overwhelming response received from the candidates for selection to the aforesaid post, and having regard to the large number of applications received, the CCI decided to undertake the selection to all posts notified in the advertisement on the basis of written test followed by interview, and accordingly it was determined that written test would be for 80 marks while 20 marks were attributed to interview. Further, candidates who secured minimum of 50 marks in the written test in the general category and minimum of 40 marks in the reserved category were called for interview in the ratio of 3 times of the number of vacancies, where the number of vacancies were more than 10, and 5 times of the number of vacancies for less than 10. The marks obtained in the written test were not disclosed to the interview committee, and the committee independently and without being influenced by the marks obtained in the written test adjudged the candidates on the basis of viva voce test and awarded the marks of the written test, which were kept in the sealed cover, were opened after the marks
given to the candidates in the interview by the interview board and tabulated merit list was prepared accordingly. The CCI, keeping in view the nature and purpose of the post, decided to fix the percentage for final selection where 70 marks out of 100 for unreserved category and minimum 65 marks out of 100 for reserved category for professional categories, in which category the post of deputy director (law) falls. It was argued that such a course of action was permissible and it was not a case where the mode of selection at any time was changed, and in so far as fixation of benchmark is concerned, that was prerogative of the employer. The learned single judge of the High Court accepted the plea of the respondents, as he did not perceive this to be the change in criteria in the selection procedure, holding that fixation of the benchmark was legal and justified. In the aforesaid backdrop, the question that falls for consideration is as to whether fixation of benchmark would amount to change in the criteria of selection in the midstream when there was no such stipulation. The learned senior counsel, appearing for one of the appellants, submitted that the case is squarely covered by the ratio of judgment of this court in Himani Malhotra versus High Court of Delhi. Full stop. All right. Okay, so someone is asking how to contact you. बताइए, आपकी स्क्रीन के सामने नीचे स्ट्रिप में व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है आपको. ओके, प्लीज़ डोंट कॉल बिकॉज देयर विल बी नो वन टू पिक अप योर कॉल. ओके, सो यू कैन जस्ट सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज एंड यू विल गेट द रिप्लाई. ओके, कैसा लिखा गया गाइज ये डिक्टेशन? गुड. ओके, बिकॉज स्पीड वॉज नॉट दैट हाई. और देखिए गाइज, एक और मैं चीज़ बोलूँगा, जब आप किसी कोर्ट के एग्जाम में जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल द अपकमिंग पटना हाई कोर्ट, हो सकता है आप बाद में कभी ये डिक्टेशन लिख रहे हो, सो XYZ रेलेवेंट जो भी आपकी एग्ज़ाम है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका सिलेक्शन सिर्फ 400-500 वर्ड्स के बेसिस पे आपको एक जॉब दी जा रही है, तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट वो डिक्टेशन आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिक्टेशन आपको लिखना पड़ेगा. क्योंकि सिर्फ 400 वर्ड्स, अगर आप सोचो अरे बस 400 वर्ड्स है यार, क्या दिक्कत है, आराम से निकालेंगे, स्पीड भी 80 है, वर्ड्स भी सिर्फ 400 है, क्या दिक्कत है. लेकिन अगर दिक्कत कुछ नहीं है तो फिर जितने लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे सभी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट. बट ऐसा होता नहीं है. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर एग्जाम्स लाइक दीज वेयर योर सिलेक्शन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट हैंड, देयर यू नीड टू गिव योर बेस्ट. बेस्ट से भी ऊपर कुछ दे सकते हो तो वो आपको देना है. वो आप कब दे पाओगे? जब आपने हर एक कॉमा को समझा हुआ है, हर एक फुल स्टॉप कैसे आता है, हर एक डिक्टेशन को कौन सा, मोस्टली कुछ वर्ड्स होते हैं जो कैपिटल होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्मॉल होते हैं. यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू राइट लॉट ऑफ डिक्टेशंस, व्हेन यू राइट मेक योर ओन नोट्स हर डिक्टेशन के बाद में कि क्या सीखा आज की इस डिक्टेशन से, आज की 400-500 वर्ड से मैंने क्या सीखा. सो व्हेन यू स्टार्ट अप्रोचिंग योर एग्ज़ाम दैट वे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आप एक्सेलेंस की तरफ बढ़ रहे हो. जब आप एक्सेलेंट रहोगे अपने काम में, तभी आपको एक ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिया जाएगा. कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम आप ये मत समझिए कि बस स्टेट लेवल में कंपटीशन है, बिकॉज फॉर्म्स तो पूरे इंडिया से लोग भर रहे हैं ना उस एग्ज़ाम के लिए. सो इट्स एन ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन.
यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, दैट दिस इज वॉट यू नीड, ठीक है. Do not call on the number, only send WhatsApp message. Okay, hope you have understood my point guys, कि मैं क्या बताना चाहता हूँ. आप थोड़ा सीरियसली अपने स्किल टेस्ट को लेके पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, अलग अलग मैटर से प्रैक्टिस कीजिए, सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कीजिए और अलग अलग स्पीड पे प्रैक्टिस कीजिए. ये नहीं कि 80 की एग्ज़ाम है तो 80-85 पर कर ले काम हो जाएगा, 90 भर में काम हो जाएगा. जितना आप अपने आप को पुश कर सकते हो उतना पुश करते रहिए. एंड आई होप गाइज आपको ये सेशन यूज़फुल लग रहा है. यू कैन शो दैट इट्स यूज़फुल बाय जस्ट क्लिकिंग अ लाइक ऑन द वीडियो. एंड इफ़ यू हैव टेकन द डिक्टेशन, डू मेंशन इन द कमेंट्स कैसा रहा आपका डिक्टेशन, ठीक है. सो दैट्स ऑल गाइज फॉर दिस क्लास. God bless you all. Take care. All the very best. ओ सोना मेरा माही उते डोगरे ते नाल, सोना मेरा माही उते डोगरे ते नाल.